Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this current affair module. This is a very crucial module दोस्तों. In one video, you get all details about UNESCO. Okay, let's start to talk about UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity. So recently, Singapore's you can say intangible cultural heritage of humanity was listed. Okay, that is called hawker culture of Singapore. Just like in our India. Okay, we have ठेला मतलब ठेले लगाए जाते हैं जहां पे आपको गलियों में खाने की अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, ठीक है, एंड दे आर वेरी फेमस, मतलब हर सिटी में ऐसा होगा, आई एम श्योर, ठीक है. आई रिमेंबर देयर आर फ्यू सिटीज लाइक वन इज इंदौर, ठीक है, हैज अ छप्पन दुकान एंड सराफा बाजार, वेरी फेमस स्टफ अवेलेबल यू कैन से देयर ऑन द स्ट्रीट फूड, ठीक है, बहुत फेमस चीज है. ओके, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से यू कैन से इलाहाबाद का जो स्ट्रीट फूड है जहाँ पे अलग अलग तरीके के खाने मिलते हैं, है ना, जो मजेदार सी चीज मिलती है वहां पे इमरती, ठीक है, वो बहुत फेमस हो जाता है वहां का, यस और नो, ठीक है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से इवन इन आवर गुजरात, सूरत इज नोन फॉर द फूड, ठीक है. ऐसा बोला जाता है कि काशी का मरण, मतलब कोई अगर मरता है तो काशी में अगर मरे, और सूरत का खाना, है ना, दे आर लाइक मतलब the ultimate things, and this is how the idea is. Anyway, coming back to our this idea of you can say hawker culture, ठीक है. So coming back to the idea of hawker culture, ठीक है, it becomes very crucial for us to understand that सिंगापुर को क्यों मिला, ठीक है. It is considered as a living you can say heritage, ठीक है. सिंगापुर में इस तरीके का कल्चर जो आपको दिख रहा है जैसे इंडिया में भी होता है. सिंगापुर इज अ मल्टीकल्चरल नेशन, yes or no, there is not only one culture. Okay, so there they get food from varieties of the cultures. This is very important, where people come, they dine, they mingle over this you can say dining space, ठीक है. They are known as hawker centers. So ये 15th edition में यूनेस्को ने जो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज निकाला, इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते हो, बट यू कैन सिंपली गो देयर एंड एक्सपीरियंस. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. सो दिस इज अ कोवेटेड लिस्ट. उस लिस्ट के अंदर जनरली जहां कहीं डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है, लोगों को उस डाइवर्सिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बातें रखी जाती है, ठीक है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 व्हेन कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज केम इनटू इफेक्ट. तो उसको सेफगार्ड करने के लिए ये करने की आवश्यकता पड़ी थी. दोस्तों, इंडिया की तरफ से ऐसे 13 आइटम्स है. कौन सा? ट्रेडिशन ऑफ वेदिंग चैंटिंग 2008 में लगाया गया, रामलीला 2008 में लगाया गया, कुत्तियाम संस्कृत थिएटर 2008 में, रामन विच इज अ रिलीजियस फेस्टिवल इन गढ़वाल हिमालय, ठीक है, 2009 में लगाया गया, मुद्दयेतु विच इज अ रिचुअल थिएटर एंड ड्रामा ऑफ केरला 2010 में लगाया गया, कालबेलिया folk you can say songs and dances of Rajasthan, ठीक है, that is in 2010. you can say Chau dance of 2010, Buddhist chanting in Ladakh, ठीक है ना, सुनते होंगे लद्दाख में कभी गए तो वहां पे होता है कि you can say बुद्धम शरणम you can say गच्छम, है ना, गच्छामी इस तरीके से बोला जाता है वहां पे. देन संकीर्ताना, ठीक है, which is a ritual drumming and dancing festival in Manipur, traditional brass and copper craft utensil in Guru, you can say Jandiala Guru in Punjab, yoga को भी नवरोज पारसीस का, एंड कुंभ मेला, दे आर द रिसेंट वंस, ठीक है. वी हैव अ टारगेट 2024 का विजन है, दैट वुड लाइक टू ऐड few more you can say things in our UNESCO World Heritage and Cultural Heritage you can say sites. दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. उनका ऑब्जेक्टिव है दैट यू कैन से दे वुड लाइक टू डेवलप एजुकेशन, science, culture, and they would like to collaborate internationally and ensure the diversity for the people. Remember, UNESCO is, you can say, developing various programs
to have an goal of this sustainable development goal SDG, जो total 17 goals है, they would like to achieve it by 2030. Remember, India joined UNESCO in 1946, ठीक है. In 2019 USA and Israel formally they got exited from UNESCO, है ना. क्यों हुआ बताइए कमेंट सेक्शन में. This is very important. This is a very important issue. Why USA and Israel they left from UNESCO? हेडक्वार्टर उनका पेरी फ्रांस में. ओके. Recently UNESCO IOC, which is called Intergovernmental Oceanographic Commission, they are working for, you can say, disaster reduction, you can say, strategy. ठीक है. Recently they approved and recognized two communities of Odisha, which is called Venkat Raipur and, you can say, Nolia Shai, which is tsunami ready community. These are the communities which are ready for tsunami attacks. So this is very interesting. Which are the other initiative by UNESCO, which is called Man and Biosphere Program, where there are cultural diversity, they are connected to biosphere reserve, biosphere management. So this is very important. So out of 18 notified biosphere reserve, India has 12 biosphere reserves under World Network of Biosphere Reserve. Latest one which was included is a Panna Biosphere Reserve. Please tell me, where is Panna? Similarly, they have also started with World Heritage Program to conserve natural and cultural sites. So India has total 38 World Heritage Sites, which includes 30 cultural, 7 natural and 1 mixed one. The latest entrant to that is a Jaipur city. Okay, this is very important. Similarly, they have a UNESCO cultural, you can say, a UNESCO global geopark network. Okay, here you can say they would like to focus on geodiversity. India does not have any UNESCO global geopark. Okay, UNESCO network of creative city, UCCN. Okay, it was created in 2004 and this network of creative cities covers, we can say, total 7 creative fields: crafts and folk arts, you can say, media art, film design, gastronomy, literature and music. And from India we have 5 cities: Hyderabad, which is known for their food; Mumbai, known for films, they were the new entrant in 2019; Chennai is for creative city for music; Jaipur is for crafts and folk arts, while Varanasi is for city for music. Okay, so these are the few of the initiatives by UNESCO. I hope this entire video will give a complete idea about UNESCO's past, present and future. Yes or no? I think this is wonderful for you. Do not miss out to go through such kind of videos on a regular basis so that you are getting complete information about it. Okay, thank you very much for watching this. Do not miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you. Have a great day.